Hello kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today we have a new topic. Our topic name is Seeds and Seeds. Let us start our chapter. It's chapter number 9, Seeds and Seeds. Let us start. Sachin was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. वो अगले दिन आने वाले थे उनकी छुट्टियों में. He was thinking about all the fun and nice food that we would have with his cousin. वो उनकी बारे में मजे करने के बारे में और खाना जो उनके साथ खाएंगे एंजॉय करेंगे उसके बारे में सोच रहा था. Just then his mother called out. उसकी माँ ने उसे बुलाया. Sachin, before you sleep, remember to soak 2 small bowls of chana. तुम ये भूलना मत कि 2 चने की तुम्हें जो बाउल है वो भिगोनी है. She was going to his bua's house and would return only in the morning. वो उसकी बुआ के घर जा रही थी और अगले दिन लौट रही थी. As he was soaking the chana, Sachin thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? ये छोटी छोटी 2 कटोरियां कैसे इनफ होंगी, पर्याप्त होंगी 8 लोगों के लिए. So he soaked another 2 bowls of chana. When his mother returned the next morning, she saw what the chana there overflowing from the vessel. जब उसकी माँ ने लौट कर देखा तो देखा कि जो चने हैं वो वेसल से मतलब बर्तन से बाहर आ गए हैं. How much did you soak? उसकी माँ ने पूछा तुमने कितने भिगोए थे. How did it happen? Wondered Sachin. ये कैसे हो सकता है? You soak too much. तुमने ज़्यादा भिगोए होंगे. Anyway, it is good. Now I will cook half of them and leave off other half to sprout. अब उसने कहा कि मैं आधों को बना लूँगी और आधों का sprout यानी अंकुरित कर लूँगी आधों को. I can send these to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts. डॉक्टर ने उनको कहा है sprouts खाने के लिए. Mother said. She tied half of the soaked chana in the water cloths. उसने क्या किया, आधे जो चने थे जो भीगे हुए थे उसको कपड़े में बांध दिया and hang them up to sprout. और उन्हें लगा बांध दिया तब जब तक वो स्प्राउट ना बन जाए. Living things produce young ones like themselves. जो लिविंग थिंग होती हैं वो अपने जैसे यंगर वंस को जन्म देती हैं, लाइक मेन का एंड डॉग का और कैट का किटन. Most mammals given birth are babies, whereas birds and rabbits lay eggs. Birds जो हैं और rabbits जो हैं वो क्या देती हैं, अंडे देती हैं. Plants are also living things. Plants भी living things हैं. They also reproduce like other living things. ये भी living things के जैसे ही reproduce करते हैं. In this chapter, we are going to have a look to how plants produce their one kids. वो इसमें हम पता चलेंगे कि उनके बच्चे कैसे होते हैं. Now, production. Production is the process by which plants produce young one like themselves. जो plants हैं वो उनके जैसे होते हैं वो. There are 2 ways in which a plant can reproduce. First, reproduction through seeds, बीजों से.
और रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, उनके पार्ट्स की वजह से रिप्रोड्यूशन करना. नाउ रिप्रोड्यूशन, their house seeds. Now the flower is the reproduction organ of a plant. जो फूल है वो रिप्रोड्यूशन वाला पार्ट है प्लांट का. Many plants from seeds inside their flower. बहुत सारे पौधों में फूल में उनके बीज मौजूद होते हैं. Now structure of a seed. ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड का यहाँ डायग्राम दिया गया है. Let's start. The outer covering of the seed is called a coat. ये है सीड का कोट, बाहरी सतह. The seed coat help to protect the cambium from injury and also from drying out. उसे सूखने से और उन्हें टूटने से बचाता है. The seed coat can be thin and soft as in beans or thick and hard as a coconut. जो सीड्स होता है, सीड्स का जो कोट होता है, बाहरी सतह होती है, वो कोमल हो सकती है बीन्स के बीज की तरह और हार्ड हो सकता है नारियल की तरह. एंडोस्पर्म द temporary food supply to packed around the embryo in the form of special leaves called cotyledons or seeds leaf. These generally are the first part visible when the seeds grain. Seeds garnets. The seeds leave short store food. जो सीड की लीव होती है, पत्ती जो होती है, वो स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट. वो बेबी प्लांट के लिए खाने को स्टोर करती है. क्या? बीज की पत्ती. Plants are classified into two groups based on the number of seeds leaves. Now, monocot. First one is monocot. A plant that has only one cotyledon. Example क्या है उसका? Wheat, rice, maize, grass and corn. These are the example of monocot. Up, dicot. Dicot, a plant that has two cotyledons like beans, rajmas and peas. इनमें दो cotyledons होते हैं. Now, generation of seed. Generation happens when a baby plant is growing. जब baby plants grow करती है तब. A baby plant is in between the cotyledons. Cotyledons क्या होते हैं? Baby plants के बीच में. Seeds needs the right amount of water. Seeds को क्या चाहिए? पर्याप्त मात्रा में पानी, air and warmth to grain it. The condition needed for generation may not be suitable at all time. सभी समय पे ये बीज नहीं होते हैं. So seeds wait for some time. Seeds कुछ समय के लिए रुक जाता है. They generate. This waiting period is called dormancy. Now, conditions necessary for generation. After generation, seedlings needs air. उनको क्या चाहिए? हवा. Water, sunlight, उन्हें पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, nutrients भी चाहिए, and develop into a new plant. तब वो जाकर एक नया पौधा बनते हैं.
Let us see that, let us see what happened of one of them is missing. देखते हैं जब उसमें कुछ मिस होगा तो क्या होगा. Seeds generate only in the first dish. Reason: all three conditions necessary for generation were met only in the first dish. When a seed starts to grow, जब एक बीज बढ़ना शुरू होता है, we saw, हम देखते हैं कि it is generating, वो बढ़ रहा है. The cotyledons store food for the baby plant inside the seeds. When the seeds start to generate, जब seeds generate start करता है, the first thing to come out is the main root. सबसे पहले क्या बाहर आता है? मुख्य जड़, main root. The skin starts to split and the tiny short stigans carrying and cotyledon with it. The main root gets bigger. बड़ी जड़ जो होती है वो बड़ी होने लगती है धीरे धीरे. The side roots appear and so do the leaves. और वो पत्तियां साइड्स में निकलने लगती हैं. Now, scattering of seeds. बीज कैसे बिखरते हैं? Now, people plant some seeds. People क्या करते हैं? वो बीज को बोते हैं. But most plants do not rely on people. Plants rely on animals, wind and water to settle their seeds. अब क्या करते हैं? प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो हवा से और जानवरों के माध्यम से इधर उधर सेटल हो जाते हैं. If the seeds simply fall, जो बीज होते हैं वो गिर जाते हैं और grow, उपज जाते हैं. The parent plant, they would be too overcrowded and would be starved of nutrients. So it is important that the seed must be scratched over a wide area where they find the combination to grow. इसीलिए ये जरूरी है कि जो बीज बिखरे वो ऐसी जगह बिखरे जहां पर वो ग्रो कर सके यानी बढ़ सके. Now, scratching by birds and animals. Animals disperse seeds in several ways. Like some plants have juicy fruits that animals like to eat, जो animals को खाना पसंद होता है. The animals eat the fruit but only the juicy part is digest. वो क्या करते हैं? juicy parts को खाना ही पसंद करते हैं. The stones and pipes grass through the animals' digestive system and are excreted from new plant. This can be far away from the parent plant. वो parent plant से दूर होते हैं. Like blackberry, cherry and apple seeds are settled in this way. Birds also like to eat fruits. Birds को भी खाना पसंद है fruits. They have to disperse seed to other areas through their droppings.
ये भी सीड्स को फैलाने में काम करती है ड्रॉपिंग के माध्यम से। Misplone has tricky fruits which are attractive to birds. वो birds को अपनी तरफ attract करता है। The sticky seeds stick to the bird's beak. वो birds की beak में चिपक जाते हैं। They them run their beaks on the beak tree. फिर वो क्या करते हैं, चोंच को अपनी पेड़ों से पहुंचती हैं। The sticky seeds are left. जो चिपचिपे सीड्स है वो छूट जाते हैं on the bark to grow into new mistable plants. फिर वो प्लांट्स का रूप धारण कर लेते हैं, बन जाते हैं। Now stretching by wind, हवा से बीज इधर उधर होना। The seeds which are dispersed by wind are smaller and have structure like wings, hair or feathers. वो क्या करते हैं, हवा के माध्यम से इधर उधर बिखर जाते हैं। These seeds are very light. ये बहुत हल्के बीज होते हैं। The seeds of orchid are almost as fine and dust. Any hairy growth on seeds acts like little puncture and carry the seeds far away from the parent plant. The seeds of dandelion are carried by the wind. वो इधर उधर ले जा जाते हैं, जिसमें क्या है, एग्जाम्पल फॉर कॉटन सीड्स। कॉटन सीड्स बहुत हल्के होते हैं जो विंड से इधर उधर चले जाते हैं। नाउ द सीड्स ऑफ thistles are also carried away by the wind. Both the dandelion and the thistle have hairy growths at the top of the seeds to carry these seeds far away from the parent plant. Now, skirting by nature, जो नेचर से स्प्लिट कर दिए जाते हैं। Many aquatic plants and plants that live near water have seeds. They can float there carried by water. ये पानी में बह जाते हैं। Plants living along streams and rivers have seeds that float downstream and therefore generate a new site. क्या होता है, तने के सहित ही पानी वो डूब जाता है, उसमें से क्या होता है, बीज झड़ जाते हैं, बीज फिर पानी में तैरने लगते हैं। The size of seeds is not a factor in determining whether it can float. Some very large seeds, बहुत कई जो होते हैं वो बहुत बड़े सीड होते हैं, like coconut can float. Some small seed can also float. बहुत बड़े बड़े बीज भी तैर जाते हैं और छोटे बीज भी तैर जाते हैं। Starting by exploration, some plants have pods that exploit with ripe and short out the seeds. Lumipide grows and brooms spread their seeds in their way. Pea and Biham plants also keep their seeds in a pod. When the seeds are ripe and pods they are dry, the pod burst. Pod क्या होता है, burst हो जाता है and open their seeds and scatter it. Now, splitting by fire. Plants cannot run away from the fire, so some plants have developed a way
to help their seeds sunrise. अब क्या होता है, कुछ पौधे ना भाग नहीं पाते आग से. Plants cannot run away from a fire, so some plants have developed a way to help their seeds sunrise. There are some species of pine trees. Pine tree जो होता है वो that require the heat from a fire. इसे क्या चाहिए, गर्मी चाहिए आग की. Before their cones will open and release seeds, beans, occupant and other Australian plants also rely on fire. Now, reproduction by different parts of plant, अलग अलग पार्ट के भागों से reproduction करना. Many plants are not produced by seeds, वो बीज से नहीं लगते. Instead, a new plants grow from vegetable part, usually a stem, तना, root or leaf, या तो जड़ या फिर पत्ती. This is called vegetarian reproduction or एक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये क्या कहलाता है, वेजिटेरियन रिप्रोडक्शन. द rhizobium plant are cones, that is they are extremely that same as the parent plant. Now production through stems से production करना. Many plants develop roots through their stem and then grow into a adult plant. बहुत सारे पौधे प्लांट जो है वो तनों से लगाए जाते हैं और वो बड़े पेड़ बन जाते हैं, बड़े पौधे. In rows, sugarcane, गन्ना, गुलाब, the stem cutting from the plant are put into moist soil. गन्ने की और जो गुलाब की जो तना होता है स्टेम, उसको काट कर गीली मिट्टी में लगा दिया जाता है. They develop roots and burst at a base which develop into new plants. वो क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट में बदल जाते हैं. Now reproduction through roots, अब जड़ों से नए पौधे लगाना. In some plants, many roots develop when they are kept in water. वो क्या कर देते हैं, उनको पानी में डाल देते हैं. These roots develop shoots and becomes new plant. ये जो रूट है वो जल्दी ही पौधे में बदल जाती हैं. Example, money plants and dahlia. मनी प्लांट और डहेलिया जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं. नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, पत्तियों से रिप्रोडक्शन करना. The bryophyllum plant, also known as air plant, or mother of thousands, can grow many new plants from this leaves. इससे नए बहुत सारे पौधे इसकी पत्तियों से लगाए जा सकते हैं. New plants from spores. Non-flowering plants are some of the oldest plants on earth. सबसे पुराने प्लांट हैं धरती पर. Some famous non-flowering plants are ferns and housetas. You can often see horseflies growing as weeds and grasses and fields. Do you know how non-flowering plants reproduce? कैसे बनाए जाते हैं? Non-flowering plants do not have flowers. उनमें flowers नहीं होते. They have to reproduce in other way. ये other way से reproduce करते हैं.
Non-flowering plants grow from spores and not from seeds. Have a look at the underside of the leaf stem. इसके अंदर देखो पत्तों के अंदर. Forms have leaves with breathing pores on the underside. अंदर क्या है? Breathing pores हैं. They also have light colored pods on the under surface of the leaves. इसके अंदर light से pods भी हैं. These pods are called, क्या कहलाते हैं? Sori. The sori protect the cell cast from the water. Inside the case is the protopalms divides into many time cells and each cell becomes a spore. Now, story of tea, चाय की कहानी. This story began in ancient China over 5,000 years ago. 5,000 साल पहले की कहानी. According to legend, the Shen-Nong and early emperor was a skilled role creative significance and promote the art. वो क्या करता था? लोगों की आर्ट को प्रमोट करता था. His far-seeing adds requirement among their things that all drinking water should be boiled as a higher preservation, hygienic preservation. उसकी सोच थी कि बॉइल करके पानी को पीना चाहिए प्रिजर्वेशन के लिए. One summer day, एक गर्मी के दिन, while visiting a distant region of अलग कारण से of his realm, he and her court stopped to rest. उसका काफिला रुका आराम करने के लिए. In accordance with his ruling, the servants bring a boiled water of a court to drink. Direct leaves from the nearby bush fall into the boiling water and a brown liquid was infused into the water. अब वो क्या हो गया? भूरा पानी हो गया जब उसमें पत्तियां गिर गई. As a significant, their emperor was interested in the new liquid. उसे वो नया लिक्विड अच्छा लगा पीने में. He drank some and found it very refreshing. उसने कुछ पिया और बहुत तरोताजा महसूस किया. Therefore, tea was created. फिर वहां से चाय बन गई. The history of drinking in India. The history of tea drinking in India. Tea drinking has and loved in different way over the year in India and differs from region to region. चाय बहुत सालों से पसंद की जाती है पीने में और अलग अलग कारणों से चाय पी जाती है. First, it was thought as the drink of royals. ये एक royals की drink मानी जाती थी. Tea has now become a favorite of the common man as India live in the world in tea drinking tea stall. सबसे ज्यादा चाय पिए जाने वाली टी स्टॉल्स भारत में हैं. From the humble roadside tea stall
stalls and the railway platform to the bedrooms for corporate India, tea is easily available. हर जगह टी बहुत आसानी से, चाय बहुत आसानी से मिल सकती है, चाहे वो रोड साइड हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे बेडरूम हो, कहीं भी tea is easily available. The cup of sweet and refreshing chai available in tea shop or train station to the masala tea of northern India. The variety of brews available is numerous. As per the history, the tea drinking in India, local people used to brew and drink tea using the leaves of wind native tea plants. Since the time, different variation the tea have amazed. The most famous among them is the Darjeeling tea. कैसी टी फेमस है? दार्जिलिंग टी फेमस है. The combination, the commercial production of tea in India was started by the British East India Company. British East India Company ने चाय उत्पादन शुरू किया. Was tract of land have been exclusively developed into tea states which produce various types of tea. उन्होंने ही खोज की जहां पर various ऐसी जगह की जहां पर बहुत तरह तरह की चाय पाई जाती है. The first tea garden was established by the British East India Company by the end of the 19th century. सबसे पहला जो चाय का गार्डन था वह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही लगाया गया था in 19th century में. Company took over tea collection in Assam, a region in the northeastern part of India. Now, point to remember, reduction is the process by which plants make young one like themselves. The flower is the reproduction organ of the plant. A seed needs right amount of water, air, and warmth to generate. The outer covering of seed is called the seed coat. When a seed starts to grow, we say it is generating. Bird also like to eat fruit. Many plants are not produced by seed inside a new plant grow from vegetables. Reproduction. Many plants develop roots, grow throughout their stem and then grow into adult plant. Non-flowering plant grow from spore and not from seeds. Non-flowering plants are some of the oldest plants on the earth. The first tea garden was established by British East India Company. From this, our chapter has been completed. I hope you all are enjoying and understood this chapter. It is enough for today. Thank you.